We have already discussed in detail. Just read, revise, and see if you are getting to understand what you're reading. In simple terms, we are removing oscillations by damping. Next. Any concern about the slide? Any doubt? We are applying a kind of control precession जो हमने देखा either by placing a weight on top of the rotor casing offset, वो भी एक मेथड था कंट्रोल प्रेसेशन अप्लाई करने का, what we call the damping precession. By controlling the liquid flow through the tube, that was also a method of applying a control torque opposite. So we are going to apply control torque in such a way that the elliptical oscillations is reduced in every cycle, amplitude is reduced, so that the spin axis will finally settle down, pointing to north with nil or negligible oscillations, which can be ignored. भाई समझ में नहीं आएगा तो पूछना आपको है, मैं अपनी तरफ से जितनी हो सकती है कोशिश कर रहा हूं कि समझा दूं, but if not I can retry only if you ask. Next. Damping in tilt is precession towards horizon. Towards horizon. ऊपर जा रहा है तो नीचे की तरफ, नीचे जा रहा है तो ऊपर की तरफ. That means if this is horizon, spin axis is going up, we are trying to bring it down. If it goes down, we are going to bring it up. So we are trying to bring it towards the horizon. That is why we are calling precession towards horizon. Damping in azimuth, on the other hand, is the meridian. When it is going away, we try to bring it towards the meridian. When it goes away, we try to bring it towards the meridian. So precession towards meridian. Clear cut understanding that top heavy में damping in tilt use होता है, bottom heavy में damping in azimuth use होता है. Next, what is damping in tilt? Any questions here?
No, sir. Good. How do we do it? As the tilting is gradually reduced, the control precession being applied is becoming less and less, and so the amplitude of oscillations becomes less and less. Finally, it will settle down at a given point. So this is what is happening to the settling. It was so much, then it, on the other hand, it went only this much. Next cycle it came here, finally settled down at the center here, which is the settling point. That is the graphical representation of the spin axis trace. This one is the amplitude graph. That means how much it deviated. This was 0, 0, 0. So this is east side and this is west side. ईस्ट में आप देख रहे हैं 030 तक मैक्सिमम गया, वेस्ट में नीचे की तरफ आया, तो इट हैज रिड्यूस्ड. फिर से ईस्ट में जब यहाँ पे गया तो इट इज फर्दर रिड्यूस्ड. फाइनली एट दिस टाइम इट इज सेटलिंग डाउन. In this case, if you see, it started from here, maximum east to maximum east. That's one cycle. How much time is being shown? 75. And that is the time period of the oscillation. That is the time period of oscillation. Please read on. Read and try to connect the image shown here with your understanding. This is a free gyroscope trace, circular. 24 hours time period. 24 घंटे में एक चक्कर लगा के आता. Then we did damping. We did gravity control. Then from there it became this, elliptical oscillations. Then we applied damping. Then it became this. The elliptical oscillations started reducing and finally settling down, pointing to north. Same thing what I said is clearly written here. Circular trace without control precession. Elliptical trace with precession, control precession. And spiral trace with PC and PD, damping and control precession. सर इसको नॉर्मली सर जायरो का जो नॉर्थ फेसिंग एक्सिस है वो पोल स्टार को, सारे जायरोस्कोप जो जायरो कंपाउंड यूज करते हैं उसको पोल स्टार को रेफरेंस माना है उसने, वहां पे माना नहीं, नहीं पोल स्टार को नहीं माना है, नॉर्थ पोल को माना है. ओके सर. अगर ये अर्थ है तो जायरोस्कोप जब पॉइंटर होएगा यहाँ पे होगा तो ऐसा होएगा, इट इज एक्चुअली पॉइंटिंग टू नॉर्थ. जब यहाँ पे होगा तो ऐसा होएगा, हॉरिजॉन्टल, अगेन पॉइंटिंग टू नॉर्थ.
जब यहाँ पे होगा तो इस तरफ को होगा, अगेन पॉइंटिंग टू नॉर्थ. सो इन दिस केस यू सी it is not pointing to this star or this star or this star. It is pointing to Earth's north pole. Remember, gyroscope's spin axis should remain horizontal at all times, should be aligned with the meridian, irrespective of what the ship is doing, where she is going. Third, when disturbed, it should come back to pointing north again. So अगर ये meridian है तो gyro compass का spin axis will be like this. If meridian is like this, the gyroscope or gyro compass axis will be like this, or like this, like this, like this, always pointing to that north. When we talked about pole star, rather not pole star but gyro star, that was only to describe the movement of spin axis of a free gyroscope. कि जैसे स्टार मूव करता है स्काई में, in the sky how the stars are moving, the spin axis also follows the same path, which is circular. The stars are apparently moving because of rotation of the earth. They are actually fixed. We are moving. तो रेफरेंस जो हमने जायरो स्टार का लिया था, that was only to describe the movement of the spin axis of a free gyroscope. Now it is no longer free. We have gravity control. सर सर एक और क्वेश्चन है. जो जब नॉर्मली जब जायरो को हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो जब उसको पहले तो नॉर्थ सीकिंग वो रहता है टू नॉर्थ की तरफ उसका एक्सेस, और उसी पे डैम वो और वेट लगा के फिर उसके बाद डैम्पिंग करके उसको सेटल करते हैं. यही प्रोसीजर है ना सर उसका? प्रोसेस यही है. ओके सर. हमने जो लिक्विड डाला उससे वो जो सर्कुलर ऑसिलेशंस था 24 घंटे में, उसको हमने 120 मिनट के आसपास का, 80 मिनट के आसपास का एक एलिप्टिकल ऑसिलेशन में वो नाचने लगा मेरिडियन के आसपास. यस सर. डैम्पिंग जब कर दिया तो वो ऑसिलेशंस भी खत्म हो गई और सेटल हो गया नॉर्थ की तरफ. एक स्पिन एक्सिस of a free gyroscope is doing all the 360-degree rotation in 24 hours. When we did gravity control, तो वो यहाँ इसके आसपास में नाचने लगा, मेरिडियन के ईस्ट और वेस्ट में नाचने लगा. अब वो सारी तरफ सारी दुनिया घूमने छोड़ दी उसने. It is remaining within the limit. Then finally, when we did damping, it started and settled down pointing to north. आई बात समझ में? फिर से एक बार डायग्राम बना दो. अर्थ, एफजीएस का ट्रेस, नॉर्थ ये है. दिस इज, इसको ग्रीन कलर में करते हैं. दिस इज ग्रेविटी कंट्रोल्ड जायरो कंपास, एंड फाइनली a gravity controlled gyro compass which is damped in tilt. Did I explain myself? कुछ क्लियर हुआ या कंफ्यूज हो गया फिर से? नो सर, ठीक ठीक. ओके, गुड. नेक्स्ट, सो ग्रेविटी कंट्रोल हमने मर्क्यूरी से कर लिया.
liquid ballastics. How we did the damping was by placing a damping weight on top of the rotor, little offset to the west, as seen from the south end. The weight will have a vertical component only when the spin axis is horizontal. When the tilting starts, the offset weight will have a tipping effect. वो गिरना चाहेगा एक तरफ को, and in doing so it applies a horizontal torque. So very clearly shown here, gravity control by means of the reservoirs and connection between them, liquid flow from one side to the other, gravity control ho gaya. Damping weight we are keeping on top of that, which is offset from the center line. We are looking at the rotor from the south end. अगर साउथ एक्सिस को पॉइंट करते हुए हम लोग खड़े हैं, तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी अपीयरिंग हियर. If we look at the rotor from east or west, it is going to look like this. If we take a top view seen from above the rotor, it will appear like this. Next, June batch, are you talking to me or not talking to me? कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ बताएंगे आप लोग? पहले ही झटका लग गया, पहले ही क्लास में. Next, next. You can leave this part, not required.
Just to inform you, just to let you know, Wx is the weight on top of it, weight working downwards, but only when the tilt happens, zero tilt, zero torque. Little bit of angle created, tilt angle created, little bit of torque. More angle created, more torque, damping torque, which results in precession, called what we are calling damping precession. Next, we know P is directly proportional to torque, inversely proportional to angular momentum. So the torque applied we have already seen is Wx sine beta. Beta is the tilt angle. Okay, ये रहने दीजिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए इसके ऊपर. Now damping in azimuth. Have we understood damping and tilt? Yes, sir. एक ही आवाज आती है बार बार मोहित, और कोई कुछ बोलता नहीं. Others, please come forward. Say yes or no. Yes तो हो गया, एक और आया. Yes, sir. Yes, sir. 3, 4, 35 में 4 आए हैं. Okay, so damping in azimuth, as we said, is similar to control precession but out of phase. जिधर को कंट्रोल प्रेसेशन आती है उसके ऑपोजिट काम करता है. जैसे दरवाजे में स्प्रिंग दरवाजे की तरफ धकेल रहा है तो डैम्पिंग उसका दरवाजे से ऑपोजिट धकेलता है. बेसिकली डैम्पिंग हार जाती है, वो कम फोर्स लगाता है, वो हार तो जाता है, स्प्रिंग जीतता है, लेकिन उस चक्कर में क्या होता है, वो स्प्रिंग जो है उसकी जीत स्लो हो जाती है, वो धीरे धीरे दरवाजा आता है चौखट तक. सेम वे हेयर कंट्रोल प्रेसेशन तो काम कर रहा है और कंट्रोल प्रेसेशन के साथ डैम्पिंग उसी लाइन में लगती है, बट आउट ऑफ फेज. आउट ऑफ फेज मतलब 100 डिग्री 180 डिग्रीज ऑपोजिट. If control precession is going west, damping will be created east, opposing. Control precession working east, damping precession will be working west, 180 degrees opposite. How it is done? Simply by controlling the narrow bore tube or flow of liquid through the connecting tube between the two reservoirs. Exactly वही चीज जो आपने जहाज में दरवाजे को एडजस्ट करने के लिए, फायर डोर्स को एडजस्ट करने के लिए यूज किया था. स्क्रू ड्राइवर से टाइट करते हैं तो या ढीली करते हैं तो रिस्पांस बदल जाता है दरवाजे के बंद होने और खुलने का. मेरे ख्याल से कैडेटशिप के टाइम से आप लोग ये कर रहे हैं. So by the same way, the weight shift is going to apply control precession. लिक्विड जब एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है, when the liquid is going from one side to the other, control precession will be applied. अगर इसको हम रोक दें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं रह जाएगा. यहाँ के लिक्विड यहाँ, यहाँ के लिक्विड यहाँ, अपनी जगह लॉक हो जाएगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं रह जाएगा. अब इसको थोड़ा सा हम खोलेंगे तो लिक्विड फ्लो विल स्टार्ट. Then there will be weight shift. So we are actually opposing the weight shift.
कितना जल्दी वेट लगेगा, कितना जल्दी वेट शिफ्ट होएगा, कितना जल्दी कंट्रोल प्रेसेशन लेगा, उसको हम अपोज कर रहे हैं बाय कंट्रोलिंग द bore of the tube. This much should be enough. सर जो मरकरी वाला उसी के बोर को हम लोगों ने कम कर दिया है उसको। बस उसी में स्क्रू लगा हुआ है, आपने नहीं किया है, ये फैक्ट्री में होता है, हमें कुछ नहीं छूना है, हमें जस्ट जानना है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो फ्रॉम कॉमन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। जब हम जहाज में होते हैं तो हमारे सराउंडिंग्स के बारे में हमें जानकारी रहनी चाहिए, कौन चीज क्या है, कैसे काम करती है, जनरल आइडिया होना चाहिए। तो ऑल दिस एडजस्टमेंट्स विच वी आर सेइंग कि डैम्पिंग इन अजीमथ, ये हम थोड़ी ही करते हैं, फैक्ट्री में होता है ये। डैम्पिंग इन टिल्ट, रोटेशन, ये वो सब कुछ तो फैक्ट्री में होता है। वी आर जस्ट ऑब्टेनिंग नॉलेज एज टू हाउ दिस थिंग ऑपरेट्स फॉर टू थिंग्स। ऑप्टिकल फाइबर भी आ गए, ऑप्टिकल फाइबर वाले जायरो। एग्जैक्टली, ऑप्टिकल फाइबर आप जो बोल रहे हैं, ये सब जो लिक्विड वगैरह ये सब खत्म है एक्चुअली आजकल के डेट में। वो टिल्टिंग होती है, एक स्प्रिंग टेंशन होता है, उससे एक वोल्टेज क्रिएट होती है, उससे डैम्पिंग लगता है। सब कुछ इलेक्ट्रिक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया है। दिस मर्क्यूरी एंड ऑल दैट इज ऑल गॉन। वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। टिल्टिंग अभी भी होगी, जायरोस्कोप अभी भी होगा। फ्री जायरोस्कोप जैसे ही टिल्टिंग हुई, स्प्रिंग लगे होते हैं, एक तरफ से टेंशन बढ़ती है, उस टेंशन से एक कंट्रोल मोटर चलता है, उस मोटर से, सर्वो मोटर से टॉर्क अप्लाई होता है, तो उसको वापस अपने डायरेक्शन में लेके आता है। तो इलेक्ट्रिकल डैम्पिंग भी होती है। We are not going so deep into it, but this is just to understand the concept. अभी शायद आप लोग के पास वो आई थी, सरीन सर ने भेजा था शायद आप लोगों को। अब सेक्सटेंट आ गया इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक सेक्सटेंट। हाँ, सो थिंग्स आर इम्प्रूविंग, थिंग्स आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप, बढ़ता ही जा रहा है आगे। So now you think that you are controlling the bore of the connecting tube. अगर आप ये कंट्रोल कर रहे हैं, दैट मीन्स जो यहाँ से लिक्विड शिफ्ट होती है इस तरफ को, आपने उसको अपोज किया, तो आपने वर्टिकल में ऑपोजिट फोर्स लगाया या नहीं? Yes, sir. Liquid was trying to pull it down. When the weight is shifted, it applies a vertical torque. अगर आपने इसको अपोज किया तो इसी को अपोज किया ना बेसिकली। Yes, जो sir. वर्टिकल टॉर्क लगने जा रही थी, by reducing the flow of liquid, you are actually applying an opposite torque in the vertical plane, correct? Yes, sir. So that it Yes, will sir. result in horizontal precession, which will be opposite to control precession. उसको आराम से जो कंट्रोल प्रेसेशन लग रही है वो धीरे धीरे लगेगी और डैम्प हो जाएगा ऑसिलेशंस, जैसे दरवाजा ऑसिलेशंस उसका ये होता है। तो दैट इज व्हाट इज डैम्पिंग इन एजिमथ। सो कंट्रोल प्रेसेशन को जब हमने अपोज किया तो इस हर बार जो ओवरशूट था, ओवरशूटिंग द मेरिडियन था, वो हर बार कम होता जाएगा धीरे 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 धीरे, और फाइनली इट विल सेटल डाउन पॉइंटिंग टू मेरिडियन। Damping in azimuth, where is it used? In which kind of compasses? Bottom heavy.
Good. Bottom heavy. Next. Remember that the damping precession is applied in such a way that it pushes the spin axis towards the meridian. जब दूर जाएगा स्पिन एक्सिस तो अपोज करेगा, जब टुवर्ड्स मेरिडियन जाएगा तो सपोर्ट करेगा. This is the meridian. As we said, when it is going away from the meridian, PD will act opposite. जब ये दूर जा करके और वापस लौटेगा तो PD will support it. On the other hand, same way, if it is control precession is taking this, PC is like this, so PD will be acting opposite. नहीं, वापस चलो. When the spin axis starts to go toward this, PD will also support it. Yes, yes, go on, go on, go on. Meridian उधर है, चलो, चलो, चलो. All this happening just by controlling the bore of the connecting tube. So this is also the spiraling curve of settling process of the gyro compass when damped in azimuth. So now what you have is a gyro compass which is settled down pointing to north. There is no fluctuation, there is no oscillation, and with that I must congratulate you. You have a working gyro compass. Yes. यस सर, थैंक यू. मतलब इसके बाद अब और थ्योरी दी है. थ्योरी अब नहीं है, थोड़ा सा थ्योरी है जो कि इंटरेस्टिंग है. थोड़ा सा थ्योरी है जो कि इंटरेस्टिंग. The theory or interesting theory that we are talking about is कि ये कहाँ पे सेटल होगा. अभी तो हमने कहा नॉर्थ की तरफ, बट क्या हमेशा ऐसे ही होगा? So the settling of the gyro compass, which is damped either in tilt or in azimuth, is what we are talking about. So there are different kind of or different settling of the two types of. अरे क्या हो रहा है? Just one second. The settling of gyro compass damped in tilt is little different. The settling of gyro compass damped in azimuth is little different. And you must know this because this will be applied in the numericals. So, any questions up to now? अभी कुछ clarify करना है जो पीछे वाली चीज है? Anything that you want to clarify once again? Or something new that you want to ask? Pranav?
No, sir. Okay, no sir. So now we talk about the settling of the gyro compass. कहाँ पे settle करेगा? अभी हमने in general बोल दिया था कि it will settle pointing to north. That's not the case all the time. The settling of the gyro compass, damped in tilt and damped in azimuth, are different. And there is an error also. It does not settle all the time pointing to north. So first we will take the case of gyro compass which is damped in tilt. We'll go to the board on this. Just one second. बोर्ड दिख रहा है क्लियर ऊपर से नीचे तक? Yes, sir. Okay. So settling of gyro compass which is damped in tilt. This is the meridian and this is the horizon. If this compass is on equator, the gyro compass spin axis will be settling down here like this. That means it will be horizontal, not above, not below, not east, not west. It will be remaining like this on the equator alone. If we go on the northern hemisphere में जाते हैं, so the spin axis is going to settle not here but with little bit of easterly error and also little above the ground. That means the pointer, the spin axis will be somewhere here. We go further up in the north, there will be more error, azimuth error. जो कम था यहाँ वो बढ़ जाएगा error. टिल्ट भी बढ़ जाएगा और ऊपर नॉर्थ में जाएंगे और दूर हो जाएगा ये. तो जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ती जाती है वैसे वैसे एजिमथ एरर बढ़ता जाता है. एजिमथ एरर किस तरफ? ईस्टर्ली. On the other hand, if we go in the southern hemisphere, the same spin axis is going to be settling here. We go further south, it will be settling here. Further south, it will be settling here. What we are saying? Azimuth error westerly, also tilt downwards. What we are saying that on equator, it will be settling like this, horizontal and pointing to north. If we go in the northern hemisphere, it will settle here, away, easterly error, above the ground. Again we come to equator, it will be settling here. No tilt, no error, azimuth error. If we go down in south, it will be settling here. Below the horizon, westerly error. So if we combine these three figures together,
the settling curve of a gyro compass which is damped in tilt will look something like this. That means no error on the equator. In the southern hemisphere, westerly error, tilted downwards, negative tilt के साथ. In the northern hemisphere, easterly error, tilted upwards, positive tilt के साथ. Now the $1,000,000 question is कि ऐसा क्यों होगा भाई? Why should it be like this? जब हमने settle कर दिया, तो why should there be an easterly azimuth error or westerly azimuth error depending on north and south latitudes? It is very easy to understand that. On the equator, when the spin axis is horizontal and pointing to north, on the equator, when the spin axis is horizontal and aligned to meridian, what do we have? What observation do we have for tilting and drifting? When it is here, aligned to meridian, azimuth angle 0, latitude 0 degree, what kind of tilting and drifting we are going to observe as the earth is rotating? No tilt. And no drift also. Very good. So it will remain like this. कोई error नहीं होगी, वो चलता जाएगा, सही रहेगा हमेशा. So it is settling down like that only. On equator, there is no azimuth error, nothing is there. It will remain like this. कोई tilting नहीं होती, ना control precision लगना, ना tilting होनी, ना drifting होना, कुछ नहीं होना. तो वो मस्त रहता है और एकदम बराबर pointing to north रहता है हमेशा. But जैसे आप नॉर्थ में जाएंगे, तो नॉर्थ में जाते ही ड्रिफ्टिंग शुरू होगी. साइन लैटिट्यूड 15 डिग्री साइन लैटिट्यूड ड्रिफ्टिंग होगी. यस सर. ड्रिफ्टिंग को रोकने के लिए व्हाट आई नीड कंट्रोल प्रिसिशन. यस सर. उसको उधर जा रहा था, उसको वापस खींचने के लिए कंट्रोल प्रिसिशन चाहिए. यस सर. कंट्रोल प्रिसिशन कहां से मिलेगा? थोड़ा टिल्टिंग चाहिए, तभी तो कंट्रोल प्रिसिशन लगेगा. हाँ जी. यस सर. कंट्रोल प्रिसिशन लगेगी तब जब टिल्टिंग होगी. टिल्टिंग के साथ डैम्पिंग प्रिसिशन भी लग जाएगा. वो थोड़ा सा खींच लेगा उस तरफ को, जो अभी हमने देखा था, ऑफसेट वेट. तो चारों चीजें आ जाएंगी. जरूरी है चारों चीजें. जो ड्रिफ्टिंग था उसको कंट्रोल प्रिसिशन काउंटर करेगा. कंट्रोल प्रिसिशन को आने के लिए टिल्टिंग चाहिए. टिल्टिंग के साथ डैम्पिंग आएगा. तो ये चारों की चारों फैक्टर्स आर एट प्ले इन दिस कंडीशन. इस कंडीशन में ये वहां पे सेटल होता है जब हमारे पास नॉर्थ लैटिट्यूड है, तो यहाँ पे ड्रिफ्टिंग शुरू होती है. ड्रिफ्टिंग को अपोज करने के लिए जो हमें कंट्रोल प्रिसिशन चाहिए, विच इज कमिंग फ्रॉम टिल्टिंग, दिस टिल्टिंग प्रोवाइड्स अस विद अ कंट्रोल प्रिसिशन पीसी, और इसके साथ साथ पीजी के साथ एक पीडी भी डेवलप होती है. The DR is neutralized by PC and the tilting is neutralized by PD. All these four forces, wherever they are in equilibrium, वहीं पे सेटल हो जाता है आपका gyro compass का पॉइंटर. North end is settling down like this. थोड़ा सा tilted, जिससे कंट्रोल प्रिसिशन मिलता है. ये कंट्रोल प्रिसिशन इस DR को न्यूट्रलाइज करता है और टिल्टिंग के साथ एक डैम्पिंग प्रिसिशन भी लग जाती है. So at this settling point,
at this settling point, PC is equal to DR and PD is equal to TG. This is the settling condition. Are we good? The same sir. case is happening in the southern hemisphere also. We know that in the southern hemisphere, drifting is westward. इस drifting को counter करने के लिए I need PC, but this PC will be obtained only when there is little bit of TG. The TG will also develop a PD. Remember, tilting in for a compass damped in tilt, damping is towards the meridian. यहाँ पे ये मेरिडियन की तरफ टिल्टिंग नीचे जा रही है, इसको मेरिडियन की तरफ खींच रहा है, सॉरी हॉरिजॉन्टल की तरफ खींच रहा है. यहाँ पे पीडी भी इसको हॉरिजॉन्टल की तरफ, होराइजन की तरफ खींच रहा है. सो प्रिसेशन टुवर्ड्स होराइजन, precession towards horizon, which is damped for a compass damped in tilt. Again, the same situation is applicable. DR neutralized by PC, the PC coming by way of TG, TG also producing PD. So this and this equal, this and this equal, वहीं पे वो settle हो जाता. तो इक्वेटर पे कोई एरर नहीं. जैसे लैटिट्यूड में बढ़े तो एरर डेवलप होती है. Now thing to understand is ये बढ़ रहा है और not only that on equator there is no error, but थोड़े लैटिट्यूड में ये एरर बहुत कम होती है और जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ रहा है वैसे ये एरर बढ़ता जा रहा है. तो थ्योरी में अगर समझें कि क्यों बढ़ रहा है, तो theoretically we can explain कि as the latitude is increasing, dr is equal to 15 degrees sine latitude. तो जब लैटिट्यूड बढ़ेगा तो dr बढ़ेगी या नहीं? यस सर, बढ़ेगी. तो इसको बढ़ने के लिए मुझको ज्यादा पीसी चाहिए या नहीं? चाहिए सर. इस ज्यादा पीसी के लिए ज्यादा टीजी चाहिए या नहीं? यस सर. ज्यादा टीजी के साथ ज्यादा पीडी लगना चाहिए या नहीं? हाँ जी सर. यस. तो यही रीजन है कि व्हाई इट इज लाइक दिस. यहाँ पे जो इसका सेटलिंग कर्व है, अगर इसको देखें तो dr छोटा सा, pc छोटा सा, pg छोटा एंड pd भी छोटा. बट यहाँ पे dr बढ़ गई, pc भी बढ़ गया, pg भी बढ़ गया और pd भी बढ़ गया. So that is the reason why it is happening like this. This is the azimuth error. Easterly in north latitude and westerly in south lat. This is how much? How do we know कि latitude अगर मान लीजिए 35 डिग्रीज है north, so how much will be the error? That is given by sine azimuth is equal to k tan latitude. This azimuth error is this error. Sine of azimuth error is k tan lat. Now this k
tan latitude तो ठीक है, but this K is what? The K is a damping factor. What portion of control precession you are applying the PD? Remember कि जब आप दरवाजा खोलते हैं तो स्प्रिंग लोड पे आता है, स्प्रिंग वापस धक्का देता है दरवाजे को, दरवाजा वापस चौखट की तरफ जाता है, जो हाइड्रोलिक डैम्पर लगा हुआ उसमें वो उसको अपोज करता है। तो जीतता कौन है अंत में? फाइनली वो अपोजिंग फोर्स या स्प्रिंग, कौन जीत रहा है? अपोजिंग फोर्स। अपोजिंग फोर्स जीत रहा है। अपोजिंग फोर्स जीता तो दरवाजे को वहीं रोक देता ना। नहीं सर, स्प्रिंग तो स्प्रिंग जीत रहा है ना। फाइनली स्प्रिंग जीत करके उसको चौखट की तरफ लेके आ रहा है। दैट मीन्स अपोजिंग फोर्स वाज लेस देन द स्प्रिंग फोर्स। यस सर। हाँ जी सर। So in this case also PD is only a portion of PC. जो डैम्पिंग प्रेसेशन होती है वो एक पोर्शन होता है कंट्रोल प्रेसेशन का। अगर कंट्रोल प्रेसेशन इतनी लगी है तो डैम्पिंग प्रेसेशन इतना लगे, and that is called damping factor. Normally in spheric compasses this factor is 1/40. मतलब PD is 1/40 of the PC. 1/40 of the PC. अगर इसको कम ज्यादा करेंगे तो वो जो सेटलिंग कर्व था इसका नेचर बदलेगा। अगर इसको बढ़ाएंगे या कम करेंगे, 1/40 को 1/30 करेंगे, 150 करेंगे, तो इसका सेटलिंग कर्व चेंज होगा। So the default value is 1/40 in most of the compasses, spheric compasses especially. So wherever you see K, you must take it 1/40 unless it is given some other value. 1/36 दिया तो you must take 1/36, but if nothing is given then it is 1/40 all the time. Is it clear? Loud and clear. The value of default value of K, the damping factor, is 1/40. Clear? Yes. Yes sir, 1/4. 1/40. This 1/40 will be used 100 times when you are doing your numericals on the compass. So wherever given 1/40, given some other value, you take that value. If not given, you must take 1/40. Various names. Damping factor, as we said, is one name, also called eccentricity of the ellipse. अगर हम देखें तो एक एलिप्स ये भी है, एक एलिप्स ये भी है, दोनों में फर्क क्या है? तो एक्सेंट्रिसिटी का फर्क है। The eccentricity of the curve defines the shape of the ellipse. It is like this or it is like this. All are ellipse. What is the difference? The eccentricity of the curve is different. So have we understood damping or the settling of the gyro compass which is damped in tilt? Yes sir. All right. Yes. So time is up, time is over, but since it is very short, we will conclude this, that damped in azimuth compasses, they settle down like this. On equator, at this place, in north, it is settling down here. In south, it is settling here. जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ेगा सेटलिंग उसकी ऐसे होगी, जैसे जैसे नॉर्थ लैटिट्यूड बढ़ेगा सेटलिंग ऐसे होएगा। आर यू ऑब्जर्विंग एनी azimuth error here? This is meridian, meridian and meridian. No sir. But what is your observation then?
how it is going to settle? Always horizontal and aligned to meridian? यस सर, नेगेटिव। थोड़ा सा Negative. उठा रहेगा सर, थोड़ा उठा। Yes. नॉर्थ में जाएंगे तो ये ऐसे सेटल होगा, साउथ में जाएंगे तो ऐसे सेटल होगा नीचे की तरफ, tilted downwards. In southern hemisphere, tilted downwards. In northern hemisphere, tilted upwards, but always meridian. That means no azimuth error. Where? When the compass is damped in azimuth. So this is the settling of compass which is damped in azimuth. No damping error, so no formula, nothing to consider. Wherever you see a question where it says you have a compass damped in azimuth, you can say goodbye to azimuth error. You say, since it is damped in azimuth, there is no settling error. Wherever you see for a compass damped in tilt, you start thinking sine azimuth is equal to k tan lat. Clear? यस सर। यस। So with this, we are done with the theory part and we have entered into numerical part. एक formula भी देख लिया. In the next class, we will derive this formula. We will derive this formula. How this damp sine azimuth is equal to k tan lat is coming at the settling point. जो हमने conditions देखे कि dr opposed by tc, tc coming by way of tg, tg के साथ damping. तो चारों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, वहीं पे सेटल हो जाता है. तो वी विल derive this formula in the next class. Bye bye. Anyone, any questions? No, sir. नो सर। बेल मुझे मार कौन करने जाएगा? क्वेश्चन पूछो फिर कुछ बताने लगे उल्टा सीधा. है ना? चलिए, बाय बाय. हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू. नाइस इवनिंग. विल मीट अगेन. बाय द वे, आप लोग कमर कस के बेल्ट कस के तैयार रहिएगा. सैटरडे को 4 क्लास लगातार है हमारी, बट वहां पे ज्यादा से ज्यादा हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हो सकता है इंटरेस्टिंग होगा. ठीक है, थोड़ा ओवरलोड ऐसा नहीं होगा, बट इंटरेस्टिंग होगा. 4 क्लासेस ऑन सैटरडे. ओके सर। चलो, बाय बाय. हैव अ ग्रेट डे. साइनिंग ऑफ.